and clear, and what a day it had been for Nifty. वन साइड आज का जो मूव था निफ्टी का देख के तो इंडिया न्यूजीलैंड के मैच की याद आ गई। दोस्तों ऐसा लग रहा था कि जब इंडिया ने न्यूजीलैंड के सामने वर्ल्ड कप फाइनल सेमीफाइनल्स में 398 मारा था, जहां तक मेरा ध्यान है निफ्टी ने भी कुछ ऐसा ही काम आज के दिन किया है, वेर यू कैन सी द मार्केट गोइंग स्काई रॉकेट हाई। एंड आई एम जस्ट गोइंग टू इंश्योर very clearly everyone is able to see me, hear me out, and people who are there on YouTube, are you able to see me? Give me a big thumbs up if you are. And I'm just going to talk about very interestingly कि यार निफ्टी रुक तो नहीं रहा है, यहाँ पर फ्रेश पोजीशंस बनाए तो बनाए कैसे। एग्जिस्टिंग पोजीशंस तो राइड करिए, सिंपल फंडा है राइड करने का, जो मैंने आपको बताया था। अगर आपने देखा होगा एक भी वेबिनार, आई हैव मेंशन्ड इट हैज बीन नियरली कितने दिन हो गए आप बताएंगे? 26-27 डेज हो गए जब से निफ्टी ने वो 3 कैंडल रूल को रिवर्स नहीं किया है। ये 2 हफ्ते पहले की बात है जब मैंने कहा था दिस इज द मदर ऑफ ऑल बुल मार्केट्स ऑन अ सैटरडे वेबिनार, एंड आई हैव आल्सो मेंशन्ड दैट ये रुकेगा लेकिन झुकेगा नहीं। और अगर आपने देखा होगा इट हैज बीन वर्किंग फैबुलसली। वर यू देयर since 2 weeks with me when I've been talking about this is the mother of all bull markets? Do not try to catch a top here. Keep riding, and keep riding, and it has gone up exponentially on the upside. And how we have seen the rallies. Gaurav Narware Singh again recovered all my losses and back to profits. Thank you for your tweets and channels, everything. Are you following me on Twitter? I mentioned about one level 21,320 वो अचीव हो गया, उसके बाद निफ्टी फिर से ऊपर गया, और मैं आपको आज दूंगा दूसरा लेवल जो मैं आज ऑब्जर्व कर रहा था, 21,499 का लेवल था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों है वो मैं बताऊंगा, बट इसके पहले मैं बात करूंगा सबसे जल्दी गैन लेवल्स के बारे में। गैन लेवल्स कौन कौन सा गैन लेवल था जो आपने देखा था क्लियरली? Okay, I can clearly see Rahul Mishra is saying, sir, record my 50% of Trishul fees. Narendra Mulani, क्या बात है? 3 lakh in options in last 2 days. Narendra Mulani is from Brahmastra mentorship batch. He has done exceptionally well. He's been doing exceptionally well, and this rally was beyond our thought. But मैं तो आपको कह ही रहा हूँ, this is the mother of bull market 2 हफ्तों से. Why it should be beyond? This is how the bull trend happens. This is one of the strongest ever rise that you might have witnessed in history, and you should not stop here. It's going to continue. मेरा टारगेट तो 22,000 के ऊपर का। ये अभी रैली होने के बाद नहीं बता रहा हूँ, ये तो पहले ही मैंने एक चार्ट पोस्ट किया था, अगर आपने देखा होगा तो। And Amit Sharma is holding 21,000 call from Janman, 45 rupees, now 600. क्या बात है, यहाँ पर टॉप पकड़ना नहीं दोस्तों, यहाँ पर अगर आप टॉप पकड़ेंगे तो मार्केट आपको पनिश करेगा। देयर इज नॉट अ सिंगल डे दैट हैज क्लोज्ड बिलो प्रायर डे कैंडल लो with a high below the prior high and low below the prior low. This is the mantra that I have given it to you, and this mantra if you have been following, you would have amazed to see कि क्या चल रहा है मार्केट में। जावेद सिंह, सर जूम मीटिंग में मजा आ रहा है, बहुत सारी चीजें सीखने मिल रही है, बहुत सारी चीजें। तो चलिए, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, अभी तो बाकी है, मोमेंटम तो अभी बन रहा है। सलमान मिस्त्री सिंह, मास्टर ऑफ साइकिल इज सिंपली फिलिंग द कैंडल, इज अमेजिंग टाइम साइकिल अर्नड अगेन 12,000 विदाउट स्ट्रेस। क्या बात है। चलिए, यही सीखना था दोस्तों। आप लोग यहाँ पर है, इसका मतलब ही यू आर ट्रेडिंग एक्सेप्शनली वेल। एंड अगर नहीं भी हो रहा है तो ये मार्केट में क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, कौन से लेवल्स देखने हैं, कौन से लेवल्स को पढ़ना है, एंड कैसे मार्केट में आगे बढ़ना है। तो ये सारी चीजों के बारे में मैं बात करूंगा। योर मंत्र इज जस्ट अमेजिंग, आई एम फॉलोइंग द रूल्स, थैंक्स फॉर शोइंग अस द राइट पाथ, ऑसम, दैट्स माय इंटेंशन। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू टेक अप, शैल आई टेक अप द पोल? आई वाज थिंकिंग टू स्किप टेकिंग द पोल, क्योंकि पता नहीं आंसर तो क्या आएगा, लेकिन चलिए ले ही लेते। What is that you are looking for the trend in Nifty in the coming week? What is the trend of Nifty in the coming week? ये एक पोल मैं ले रहा हूं आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ में,
जो and people who are there on YouTube, do you want to be participating on the poll? Then you just join me on the Zoom platform, and do not forget to subscribe, like, share this video of Friday at 4, because this is just the way market moves, and हम इसे बहुत ही साइंटिफिक वे में देखते हैं कि कैसे इसे ट्रेड करना है हमें. This is how we look at it. Wow, the poll is on the expected lines. That is showing. Let me first stop the poll. नहीं तो आप लोग यहाँ पर पोल पे से बायस होके व्यू चेंज कर देंगे, इसलिए आई एम नॉट सेइंग कि ये पोल क्या दिखा रहा है. बहुत ही क्विकली आई एम जस्ट गोइंग टू स्टॉप अक्रॉस द पोल now. And very interestingly, 75% of the people are expecting markets to go up. 25% are catching that reversal. I am with the 75%. I am not going to fight the trend. Trend is your friend. भाव भगवान छे, प्राइस इज गॉड, एंड समय बलवान छे. ये मंत्र के साथ में अगर चलेंगे तो मार्केट से फाइट नहीं करेंगे, मार्केट में कैसे एंटर करना है उसके बारे में सोचेंगे. तो ये पोल मैं एंड कर रहा हूं, स्टॉप कर रहा हूं. बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों यहाँ पर. एंड दूसरा गैन लेवल कौन सा था? 21,683 इज द गैन लेवल विच वी हैव लुक्ड एट. एंड क्या जा रहा है निफ्टी? डायरेक्टली जो पहला गैन था उसके ऊपर गैप अप ओपन हुआ. 21,098 वाज द लेवल, वही सपोर्ट लिया, वहां से ओपन हुआ और वापस से चल रहा है दूसरे लेवल की ओर, विच इज 21,683. You will not believe, when it was around 21,000 there were so many people who mentioned ki Gann will not be achieved and this and that, and with a bang, and I have maintained my stand when there was a move down towards the level of 20,780. I still mentioned this market is buy on dips because there is not a single close below prior candle low with the three conditions, and that's how it happened. My target for today was 21,499, and ये टारगेट क्यों था वो मैं बताता हूं. और आज का हाई आप देखना चार्ट पे, प्रिसाइज सटीक जाके उसी लेवल पे रुका है. रुका नहीं है, मतलब वहां तक गया है, क्योंकि रुकने का मतलब तो रिवर्सल है. मैं कह नहीं रहा हूं रिवर्स होना चाहिए, आई एम जस्ट सेइंग वहां जाके रुका है. सो बहुत ही क्विकली आगे बढ़ने के पहले दोस्तों एक कम्युनिटी है हमारा व्हाट्सएप का. ये है क्यूआर कोड वो कम्युनिटी का. फॉर ऑल दी अटेंडीज दिस इज द क्यूआर कोड एंड द लिंक विल बी शेयर्ड बाय माय कलीग. स्कैन करिए, आप मेरे कम्युनिटी व्हाट्सएप में आएंगे, जिससे जो मार्केट का अपडेट है ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स आपको मिलेगा. बहुत सारे जन ट्विटर पे नहीं भी होंगे, लेकिन व्हाट्सएप पे मिल जाएगा. तो ये ज्वाइन करिए, क्यूआर कोड निकालिए फोन पे से, फोन पे क्यूआर कोड डालिए, स्कैन करिए, आप ज्वाइन हो जाएंगे. और नहीं हो पा रहे तो लिंक भी दी जा रही है यहाँ पर, और प्रोड्यूसर साहब साथ ही में ये लिंक को यूट्यूब पे भी दे दीजिए, वहां से लोग यहाँ पर ज्वाइन कर पाए. सो चलते हैं दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते. एंड यहाँ पर मैं ये एंड करता हूँ स्लाइड शो. और शेयर सबने ज्वाइन कर लिया? बहुत क्विकली, टाइम नहीं है हमारे पास. देखना है मार्केट का टारगेट क्या है, देखना है नियो वेव के हिसाब से क्या हो रहा है और गैन के हिसाब से क्या हो रहा है. ये दोनों लेवल्स के हिसाब से हमें मार्केट को देखना है. पहले तो हम देखेंगे कि वेव थियरी के हिसाब से ओवरऑल मार्केट में मूवमेंट क्या है. तो यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने चार्ट शेयर करता हूं बहुत ही क्विकली. ओके, फेल टू ज्वाइन द ग्रुप. क्या आप लोग ज्वाइन कर पा रहे ग्रुप? अगर कर पा रहे तो गिव मी अ बिग थम्स अप. मैं भी चेक कर लेता हूं कि भाई आप लोग ये ग्रुप सही ज्वाइन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे. आई कैन सी सो मेनी ऑफ यू आर ज्वाइनिंग दैट ग्रुप. ओके, ऑसम. तो ये मैं अभी चलता हूं आपको लेके चार्ट की ओर, ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते. यहां पर देखते हैं what is the movement of market and what is that you are seeing on the chart. ये है निफ्टी का चार्ट, और देखिए जो मूव है ये 1 आवर चार्ट है. द ट्रेंड हैज बीन एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग. इफ आई डू वेरी क्विकली इन नियो वेव काउंट, मैं नियो वेव के बारे में बात कर रहा हूं, फिलहाल एलियट की बात नहीं कर रहा, और ये तो फिलहाल एलियट में थर्ड वेव होगा. नियो वेव के हिसाब से अगर देखें, रैली शुरू हुई थी यहां से देखेंगे तो दिस वाज वेव ए, बी, सी, 7 लेग डायमेट्रिक पैटर्न था डी, यहां पर ई,
हो सकता है शायद वेव एफ, मैं आज बहुत डिटेल में चेक कर रहा था, एफ यहाँ होके जी, सो जी और ए बहुत सिमिलर और छोटा था। ये पूरा साइडवेज एक्शन हो गया एक्स वेव, यहां पर पूरा साइडवेज एक्शन एक्स वेव में हो गया। यहां से जो रैली आई वो आई वेव ए में, ये जो रैली है वो वेव बी में है, और यहां पे फिलहाल सी है जो 61.8% ऑफ वेव ए है फिलहाल के लिए। तो ये है मेरा नियो वेव काउंट जो मैं देख रहा हूं। यहां पर मैंने आप लोगों के लिए पूरी तैयारी कर रखी है, इसलिए मैंने ये काउंट को ऑलरेडी स्क्रीन पे डाल रखा है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे काउंट्स ऑलरेडी यहां पर बना के मैंने रख रखे अलोंग विथ चैनल। नाउ 21,499 इज द लेवल जो सुबह से मार्क था मेरी स्क्रीन में, एंड आई वॉज लुकिंग एट दिस over here. Dr. Shah Sir is saying, sir, I request our PM Modi ji to award you Padma Bhushan Award for your service to Indian stock market. अरे भाई, मैंने कोई सर्विस नहीं की है, मुझे तो मजा आता है आप लोगों से बात करने में और बताने में क्या मुझे दिख रहा है मार्केट पे। दिस इज जस्ट आउट ऑफ माई पैशन, आई एम डूइंग इट। फॉर दैट अवार्ड यू नीड टू बी समवेयर, आई एम nowhere right now. So I'm nowhere, I'm just helping you all to learn this science, and it is a science. I'm trying to explain you the science. So this is what the neo wave count is. So what are we seeing on Nifty? So Nifty high, which is made today, is exactly at 61.8% of previous rise. This is neo wave, this is not Elliott wave, okay? And but are we going to catch a top here, or are we going to reverse from here? I have my doubts. I'm not looking at it. So what is the path ahead from here? यहाँ से आगे कैसे देखना है? What is the path ahead as per Neo Wave and Gann is what I'm going to share you now. यहाँ पर ओवरऑल अगर हम देखेंगे, आज का जो हाई है 21,499. If Nifty takes out the high of 21,499, then we might be headed towards much higher level, which is going to be 76.4, which is 21,671. That's the next level, और उसके ऊपर का भी लेवल है, लेकिन इस लेवल के आसपास मेरा एक चैनल का रेजिस्टेंस भी है। तो मेरा जो अल्टीमेट टारगेट फिलहाल के लिए निफ्टी पे निकल कर आता है, निफ्टी पे जो अल्टीमेट टारगेट मेरा आता है फिलहाल के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए है 21,499. This is where we are, and if this level is crossed, then we can head towards 21,672. और एक और मजेदार वाली चीज ये है कि 21,683 is also our Gann square of 9 level. So 21,683 हमारा Gann का लेवल है, 21,671 is 76.4, which is also the channel, which means this can be our very important target. Okay, ये मेरा important target है, अल्टीमेट टारगेट नहीं है। हमने रिसेंटली एक मंथली रिसर्च पब्लिश की है जिसके अंदर अल्टीमेट टारगेट भी दिया हुआ है। मैं आपको बहुत ही क्विकली बता देता हूं, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाऊंगा ज्यादा, बट यहां पर अगर मैं आपको बताऊं कि कहां पर मेरा टारगेट निफ्टी पे डेली टाइम फ्रेम पे आता है, वो है ये वाला चार्ट। और यहां पर बहुत ही क्लियरली, ये चार्ट मैंने ट्वीट भी किया था, इनकेस आपने मिस कर दिया होगा, तो यहां पर है हम फिलहाल के लिए। दिस इज वेयर वी आर राइट नाउ, and this is purely as per Neo Wave. 22,118 is the level, and 21,683 ये अभी नहीं लिखा गया दोस्तों, ये तो बहुत पहले लिख दिया था जब भी ये रैली यहां पर थी, वो टाइम पे ये लेवल्स मार्क करके लिखे हुए थे। Ulapali is saying that yes, absolutely, 22,118 is the level which has been already marked long back using this chart. So this is a neo wave count which suggests that we are just in the form of wave E on the upside, and the ultimate target we should see is 22,118. वहां पर भी खाली वेव E कंप्लीट हो रहा है दोस्तों, उसके बाद तो वेव F भी आएगा और फिर जाएगा वेव G,
तो सोचने वाली बात ये है कि ये पूरा पूरा जो रैली है, so wave A has started from where? यहाँ से. This is A, B, C, D. This is just wave E going on right now. And post that there is going to be a much higher room that you are going to see on the market, which is going to be that level of 22,118. And Gann level is 21,683. This is one of the strongest candle that is you are seeing on the chart here. Do not try to catch a top here. Just keep riding the momentum, and it is not stopping anywhere. It is not stopping anywhere near. That's the power that you are seeing right now on this specific chart. Now, यहाँ पर ये 55 days का cycle है, which should ideally produce a low. तो गुंजाइश है, ये जो हमने डिप देखी थी, दिस इज द लो ऑफ 55 डेज टाइम साइकिल विच इज 20,760. तो जब तक 20,760 इंटैक्ट है, ओवरऑल टोन विल रिमेन बुलिश फॉर द मार्केट. दैट्स अ फार अवेलेबल. आप बोलोगे इतना दूर का लेवल का क्या करें? अरे यार, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो, you know you can sell options of this strike price and make a lot of money. Many of you who are missing out, are there people who are missing out this rally? You have that feeling of fear of missing out. यार नीचे आएगा, बहुत चढ़ गया, नीचे आएगा, बहुत चढ़ गया, डर लग रहा है, क्या करे पता नहीं, राइड करना है लेकिन एंट्री नहीं मिल पा रही है. ऐसे लोग होना भी चाहिए. मार्केट का मूवमेंट ही ऐसा है. इट इज नथिंग टू बी ashamed of. What is that there will be fear of missing out. There's nothing wrong about it. Okay. No chance of missing out. Your tweets are with us. Okay. So now, what to do in this kind of a scenario? The most important aspect that you have to take care of is options. If you have an option as an instrument, I am telling you, you can trade options exceptionally well. Okay, you can trade options exceptionally well, and this is the market where buy and hold will work exceptionally. If you remember, I've been talking about since about a month, Nifty IT sector is going to lead the rally, and you are just witnessing it has just started about leading the rally. यहाँ से, so Nifty IT sector is going to be in the forefront. It has just started. It has just started, and it's very important. I have been talking about Nifty IT sector, Nifty Pharma sector. These sectors are going to lead the rally, and Nifty IT ने तो अभी शुरू किया. So do not try to catch a top. और एक और चीज सोचने वाली ये है, आपने लूनार साइकिल पे ध्यान दिया था क्या? लूनार साइकिल that I have talked about very clearly on very importantly. अगर आपने ध्यान दिया होगा लूनार साइकिल के बारे में, 13th की बात की थी कि 13th को लूनार साइकिल है, and you need to ensure that you are going to witness again a low formation and a trend should start. याद है मैंने कहा था, again on a Saturday I have talked about why this lunar cycle is going to be the beginning of reversal back on the upside, and you cannot afford to miss it. You cannot afford to miss it. और ये चार्ट मैं आपको एक और चार्ट दिखाना चाहूंगा दोस्तों, बैंक निफ्टी का चार्ट है, और साथ ही में बैंक निफ्टी के चार्ट में कैसे मार्केट का मूवमेंट एग्जैक्टली लूनार के साथ शुरू हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूं. ओके, नरेंद्र मुलायम सिंह, यस आई एंटर्ड ऑन द अमावस्या डे व्हिच वाज 13th December. ये चार्ट देख रहे हैं दोस्तों आप लोग? आर यू एबल टू सी दिस चार्ट, एवरी वन ऑफ यू, where it is mentioned basis of the time cycle of Bank Nifty 13th of December 10:30, and this was done on 9th of December on a Saturday when Bank Nifty was around 47,283 कि वापस से 13th को 10:30 बजे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी बैंक निफ्टी में एंटर करने की, और उसी दिन लूनार साइकिल भी है. ये दोनों चीज मेंशन की थी. अभी देखते हैं ऐसा क्या हुआ बैंक निफ्टी पे, ऐसा कुछ हुआ क्या? लेट अस जस्ट go on the chart and let us just try and see that. Just give me a second. And if I share you another chart which is of Bank Nifty, you will be shocked to see how Bank Nifty behaved so precisely. Just give me a second. Let me just open up that chart and share it across very quickly with you all.
और बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट था वो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ जैसा हम सोच रहे थे बेसिस ऑफ दिस टाइम साइकिल. सो ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट. If you look at this, 10:30 a.m. was the level mark. 46,900 से लेके 47,900 बैंक निफ्टी आया. 1,000 पॉइंट मूव. ये तो अभी दोपहर का था, उसके बाद तो अभी ऑलरेडी वापस ऊपर है बैंक निफ्टी. मोर देन 1,000 पॉइंट मूव फ्रॉम दैट 13th. आज 15th है. एक ही दिन का मूव आ गया था उतने में तो गैप के साथ. एंड एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट फेड. आई एम टेलिंग यू, I was not even bothered what the Fed is going to do because this is what was there on my chart. On my chart, I was aware about the date and the time, and that is sufficient for you to take a position. Because Fed का आउटकम तो Fed ही जानता है, लेकिन मार्केट क्या करेगा वो हम देख सकते हैं चार्ट के बेसिस पे. बिकॉज चार्ट नेवर लाइज. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू अंडरस्टैंड चार्ट नेवर लाइज एंड दिस इज हाउ यू हैव टू लुक एट द ओवरऑल मूवमेंट ऑफ द चार्ट. चलिए, अभी तो हमने देखा. You are reading the horoscope of these indices. I am still writing your prediction on SBI breach of 573. Don't know when and how to exit. Mesmerizing. क्या बात है. 573 के ऊपर कहा था बैंक निफ्टी को राइड करने के लिए. एंड देखिए बैंक निफ्टी अब एसबीआई को, एंड एसबीआई देखिए क्या चला है. तो चलते हैं दोस्तों फिर से चार्ट पे. तो दिस इज हाउ इट हैज बीन मूविंग, दिस इज हाउ इट हैज बीन लुकिंग, एंड इट हैज बीन सिंपली फैबुलस. नाउ लेट अस लुक एट the aspect again very clearly. What is the path ahead of Nifty from here on? So यहाँ पर अगर आप ये चार्ट देख रहे हैं, this is nothing but Nifty along with 55 days time cycle, which looked to have formed a low again near 20,700 levels, and on upside the ultimate target basis of neo wave is going to be 22,118. That's how I'm going to look at this. So पहला पड़ाव 21,683. इसके बहुत पास में आ जाएंगे हम कल परसों के दिन में, मतलब मंडे ट्यूसडे पे. एंड फिर वहां से हमें शायद एक डिप मिलेगा वापस से एंटर करने के लिए. सो 22,118 नेक्स्ट वीक में आएगा नहीं यार, उतना ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं हूं मैं. 22,118 शायद टाइम लेगा, इतना जल्दी नहीं आएगा. एंड दिस कैन कम इवेंचुअली इन जनवरी. दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग. बट फिलहाल यू नेवर नो, मार्केट अपने मूड में है एंड इट इज ऑन अ वाइग्रा डोज. Let us not stop it. Let continue to ride it. That's the best way of riding the market right now, and that's the easiest way. So do not try to fight this trend. I'm telling you, many of the people who are fighting this trend are going to be simply left behind, and instead of making money in one of the best market scenario, you will end up losing money. So do not fight the trend. Keep riding it. Wrong होंगे चलेगा, फिर से जाएंगे, मैं एक मौका मिलेगा. So options, as I said, are classic instrument for you to enter. How to enter is in options. If the market is riding and you are not very confident, deep out of the money option को 500 पॉइंट दूर के option को राइट कर दो. When you sell an option of 500, 600 points away, you still end up getting 15 rupees, around 10, 15 rupees. And that is sufficient. Because once you are writing the options and you are able to get that 10, 15 rupees, you are able to make out, say, a percent of the around a percent or in a week's time. तो मतलब वीकली आपने 4% निकाल लिए, एनुअली आप 45, 48% हो जाता है. And this is how you need to write the option. So this is how I am looking at the chart. And just a second. मोस्ट कॉल डबल्ड इन 1 hour. यस ऑफ कोर्स, वो तो हो ही जाएगा ना. अब इतना बढ़िया जो मूव है उसके बाद तो होना ही है. एंड चलते हैं अभी गैन की दुनिया में. शैल वी डू दैट एवरी वन ऑफ यू? Shall we go on to the levels of Gann and see where the overall movement of Nifty as per the Gann looking on the chart? I'm just going to load up very quickly for you all the Gann levels that we are seeing and how it has been going in this uptrend like a rocket.
तो देखते हैं यहाँ पे शुरुआत कहाँ से हुई थी ये गैन लेवल की। ये सारे जो लेवल्स आप देख रहे हैं चार्ट पे। Okay, Vibhuti is saying with a capital of around 60,000, I have made 200,000 in just 11 trading sessions. Simply call buying. Super. This is super. You guys are doing fabulously well, and that is amazing. यहाँ पर अगर हम देखेंगे, this was the level where the low is formed at 18,838. यहाँ पर लो बना 18,838 पे। इसके बाद में the next level was 19,391. It started pausing around it, formed the base, वापस गया। एंड देखिए तीनों के तीनों बार दोस्तों यहां पर है मैजिक गैन का। इफ यू आर लुकिंग एट दिस, इफ यू आर लुकिंग एट दिस, दिस इज द लेवल वेयर डायरेक्टली गैप अप अबाउट 19,952 एंड द लो इज फॉर्म्ड देयर। Gap up about directly 20,521 and the low is formed there. Gap up about 21,098 and the low is formed there. Can you believe yourself? All the three levels of the Gann are taken out with the gap exactly the low forming at that level. देख रहे हो आप तीनों के तीनों बार, और ये बहुत दूर के लेवल्स है, ऐसा नहीं यार 600 पॉइंट्स के दूर के लेवल्स है। इफ यू लुक एट इट, दिस इज द कैंडल, दिस इज द कैंडल एंड दिस इज द कैंडल। इफ यू लुक एट ईच ऑफ दीज कैंडल, each of these candle have taken out the level with the gap and gap, and look at the rocket that you are seeing on the upside. And this is just simply amazing. And Rachit Arora is saying, sir, you are the one who said that if Nifty breaches 19,814 before 14th December, then a mad bull market will start. And I still remember those words. And look at it. Look at it. I mean, I'm sure you people are really loving this science. And this is a sacred science of how it works, how you have to look at it, how you have to trade it. This is a sacred science. And if you're looking at this, so what I'm showing you right now is the Gann levels. So यहाँ पर अगर आप देखेंगे Nifty is moving in gaps, बराबर है, लेकिन but all of these gaps are breaking exactly from the Gann levels, with low made this time also near 21,098, the Gann level. That is how it moves. That is how it moves in a very, very specific, systematic fashion. So next Gann level कौन सा है यहाँ पर? Next Gann level है 21,683. 21,683 is the next Gann level where you are going to see the ultimate resistance can hit, या तो वो gap से निकलेगा. So this is how you have to look at the entire science of trading the market along with neo wave. So क्या क्या levels मिले हमें? 21,499 वेव थियरी पे जो लेवल देखा था वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके बाद का जो लेवल आ रहा है वो 21,673 पे आ रहा है, जो कि वेव सी का 76.4% ऑफ ए है, 76.4% है। 21,683 is also the Gann level. Also, we know that the lunar cycle this time again moved fascinating. I mean, amazing. This is the low which is again made on the lunar cycle. And look at the move. So this is, I call as a sacred science. This is a sacred science. And this is how you have to look at it. And this is how you have to share across, you know, the cumulative study. कैसे combine करना है? How you have to share across these studies with one another. How are they related to one another? And it works. That is the ultimate aim. सोचो ना, अगर किसी ने आपको बोला होगा यहाँ पर किसी ने आपको बोला होगा we are starting the mother of the bull market and this is the mother of the bull market that you are witnessing, no one will believe, right, at that point of time. So that's what I am saying. This science helps in understanding. Now, when you're looking at options, it is very important that you pay attention to certain momentum indicator, which is known as KST. लगाऊं क्या KST indicator? ये तो हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं, any which ways.
यहाँ पर मैंने KST इंडिकेटर डाला है and it has been on a ride, like huge momentum that you can clearly see right from these levels. The momentum on KST has been simply super. Are there people who are going to be who are part of the Trishul program or options mantra, which is starting tomorrow? Are there people part of Trishul, which is options mantra, Elliott wave and Neo wave? I call it as the Trishul now. And Om, which is options mantra. I call it as an Om, which is starting tomorrow. Okay, I can see so many of you are here. Romi, Khurjit, Narendra, Prajakta, बहुत सारे जने, राहुल मिश्रा, क्या बात है। तो बहुत, जसविंदर सिंह, बहुत सारे जने जो कल मुझे जोड़ने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत ही क्विकली मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ। टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट शार्प एट 10 AM, so please be ready. Our session is going to be till 4 PM, so accordingly time yourself. बीच में lunch break होगा, so do not worry, there will be a lunch break in middle, so ensure you are paying all the attention to me in these 2 days of time, or 16th 17th of December, which is tomorrow and day after. If in case you miss it by any chance और network issue हुआ, recordings भी आपको दी जाएगी, so you don't really have to worry about it, you don't have to bother about it. So हम करने क्या वाले, we are going to start with options. ऑप्शंस का प्री सेशन वीडियो आपको मिल गया होगा, अगर नहीं मिला है तो मेरी टीम अभी कॉन्टैक्ट नंबर देगी, उस पर कॉल करिए, दे विल गाइड यू एंड हेल्प यू आउट विद द प्री सेशन वीडियो ऑफ ऑप्शंस। वो वीडियो को आपको कल के पहले देखना है। सेकेंडली, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ 5 mantras of options which is going to be our trade setups for going forward. The 5 mantras of option that I'm going to give it to you is price action. That's the first thing. First mantra, I'm going to combine price action with the momentum indicator KST. ये जो KST इंडिकेटर आप देख रहे हो, इसे कैसे यूज करना है हमें, और 15 मिनट के चार्ट पे कैसे KST इंडिकेटर को कंबाइन करके हमें ट्रेड निकालना है, ये मैं आपको कल बताऊंगा ऑप्शंस मंत्र में। ये KST इंडिकेटर मोमेंटम इंडिकेटर, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। वी आर गोइंग टू लुक एट सुपर ट्रेंड एज अ ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेशन। आपने अगर मेरा ट्वीट देखा होगा, मैंने सुपर ट्रेंड दिखाया था, कैसे उसे ट्रेंड फॉलोइंग की तरह यूज करना ऑप्शंस बाइंग के लिए या स्टॉक्स बाइंग के लिए। दैट्स द थर्ड मंत्र आई एम गोइंग टू शेयर अक्रॉस। आई एम गोइंग टू शेयर अक्रॉस मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम। एक मूविंग एवरेज का सिस्टम है जो बहुत बार सिग्नल नहीं देता ऑप्शन बायर को, कम बार देता है, लेकिन अगर सिग्नल मिला तो बहुत ही शानदार सिग्नल चलता है। So I'm going to do that. And the fifth final mantra, which I've never ever revealed before, is Keltner channel. Keltner channel is superb. If I just apply Keltner channel now, you can see it works fabulous. So अगर मैंने यहाँ पर Keltner channel लगा दिया और आप देखेंगे Keltner channel works fabulous. This is different than the momentum Bollinger Bands. This is Keltner channel and there is a way to apply it. This is the bands and prices उस band के ऊपर है, and you will know when it reverses. This is classic way of looking at it. तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को साथ में कंबाइन करूंगा, 5 मंत्रों के साथ हम ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी बनाएंगे। ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी के लिए आई वांट टू also understand from here how many of you are actually also into the option trading and what is the capital that you are trading with, क्योंकि ये सारी चीजों से मुझे कल परसों के लिए भी पता चलेगा आप लोगों के बारे में, and this is very important also. This is very important to understand. Okay, I can see so many of you are here with the capital of 0 to 1 lakh और 1 to 5 lakh के बीच में बहुत सारे जन हैं। तो यहाँ पर मोमेंटम, KST, केल्टनर, इन चीजों को क्लब करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके साथ में ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम प्रोफाइल तो ऑफकोर्स हम देखने ही वाले हैं। तो ये सारी चीजों को क्लब करके एक सेटअप बनाएंगे। ये सेटअप मैं आपको दूंगा जो आपको मंडे से स्टार्ट करना है यूज करना, और बाद में उसके रिकॉर्डिंग्स भी दूंगा, साथ में फॉलोअप सेशन भी होगा। सो यू जस्ट हैव टू इंश्योर and you need to be a part of this. So I'm just ensuring you do not miss this opportunity which we call as options mantra या om. तो ये कल से शुरू हो रहा है। Are there I am just checking with the team if there are few more seats left and we can accommodate
we take limited participants only. The reason being, I want to ensure to answer every single one of you, every single question that you are asking. I want to answer that. I do not want to leave unless I address every single query I get in the session. And इसीलिए हम बहुत ही लिमिटेड सीट्स लेते हैं. अगर लिमिटेड सीट्स अभी बाकी है दोस्तों, फुल नहीं हुई है, तो प्रोड्यूसर साहब शेयर करिए वो लिंक सबके साथ में. वहां पर जाके आप यहां से देख सकते और लिंक पे से रजिस्टर कर पाएंगे अगर सीट्स पेंडिंग है हमारी तो. एंड द रीजन आई एम डूइंग दैट इज बिकॉज यू आर हियर विथ मी, गिविंग योर टाइम टू मी, एंड सो आई एम नाउ आई एम एंडिंग द पोल. Since you are giving the time to me, I am now going to be allowing a few. Once we are full, then we will not be able to allow. So Gann को कैसे प्लॉट करना है, that I am not going to do that. ये Gann plotting तो ब्रह्मास्त्र में है. ब्रह्मास्त्र is the mentorship program which is already started and going on, where we look at all of these things. We are going to look at it. So and this is going to be simply amazing. So 5 मंत्र के साथ ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम प्रोफाइल होगा. ऑप्शन बाइंग के साथ ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा. तो आई एम जस्ट टेकिंग अ वेरी क्विक पोल हियर जस्ट टू अंडरस्टैंड वेरी क्विकली यहां पर कि इफ यू आर विच इज योर पाथ टू फाइनेंशियल फ्रीडम, जस्ट टू इंश्योर दैट कौन से पाथ में आप हो फाइनेंशियल फ्रीडम. त्रिशूल इज कंबाइनिंग ऑप्शंस मंत्र प्लस एलियट वेव प्लस नियो वेव, फोरकास्टिंग, सीक्रेट साइंस. साथ ही में यहां पर हम क्लब कर रहे हैं ऑप्शंस को. ये दोनों का बहुत ही कॉम्बिनेशन है. एंड ब्रह्मास्त्र इज समथिंग विच इज एवरीथिंग, विच कंबाइंस एवरीथिंग टुगेदर, प्लस मेंटरशिप सेशन जो हमारे होते हैं, प्लस लाइव ट्रेडिंग सेशन जो होता है, वो सारी चीजें ब्रह्मास्त्र में आती है. सो ब्रह्मास्त्र इज नॉट, सो लोगों को लगता है ब्रह्मास्त्र मतलब ये सारा का मिश्रण. नहीं, Brahmastra is mentorship, which is having mentorship sessions separately. In addition to that, you get options mantra. In addition to that, you get Wave Sutra, plus you get videos of Master of Cycle, which I call as Kal Chakra, जिसमें Gann के बारे में भी है और Time Cycle के बारे में भी. So you will be getting those videos under Brahmastra. But the sessions have already started for Brahmastra. That is what I want to tell you across. Ritesh is saying, without doing Brahmastra, can we join Options Mantra? Yes, Options Mantra is a program we have tomorrow and day after. You can be a part of it. You don't have to necessarily be a part of Options Brahmastra for that. But if you are a Brahmini, I'm not sure if I'm calling it right. A mentee told me someone who learns Brahmastra is known as Brahmi, if I'm right in that front. So am I right? Are you people aware about that? Brahmi. Yes. Pulapali, thanks for correcting me out. That's how it's going to be. So we have named it because it's a sacred science. And आप मानेंगे नहीं, सूत्र ऑफ वेव्स हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि सूत्र ऑफ वेव्स मतलब सो मीन्स SOW, मतलब बीज बोना, इसलिए सूत्र ऑफ वेव्स कहते हैं. ऑप्शंस मंत्र ओम, that is why we call it options mantra. Brahmastra is the weapons that you get to be fighting the market and making money out of it. Is called as Brahmastra. And Trishul is options mantra and Sutra of Waves is Trishul. 3 programs: Elliott wave, Neo wave, and options mantra. That's called as Trishul. So many of you were curious ki how are we labeling this, naming this? That's the entire aim. Awesome guys. So बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट है. मार्केट में आपको टॉप नहीं पकड़ना है, सिंपल आपको रखना है. यू नीड टू बी राइडिंग दिस ट्रेंड. यू नीड टू नो हाउ टू राइड द ट्रेंड. यू नीड टू नो व्हेन टू एंटर. इंट्राडे ट्रेड करने में शायद अपॉर्चुनिटी नहीं मिली हो आज, बिकॉज इंडिकेटर्स आर ओवरबॉट. बट पोजिशनली अगर आप राइड करें, कंटिन्यू टू राइड, डू नॉट एग्जिट, क्योंकि फिर से एंटर करना आसान नहीं है इस मार्केट में. और अगर फिर भी आपको एंटर करना है, enter by forming some option strategies, by writing options, by selling put options, but you need to know which strike price to select. And that is all we are going to do in much detailed fashion in the 2 days of options mantra. That is all from my end, guys. I've talked about Gann, I've talked about wave theory, I've talked about targets, I've talked about time, I've talked about these things today.
and loved talking to you all. And thank you very much for joining. And people on YouTube, do not forget to subscribe, like, share, comment डालिए आपका, तो एटलीस्ट मुझे पता रहेगा कि आप लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं. And everyone who has been a part of Brahmastra and Om program, be ready for tomorrow and day after. I'm going to thrill you. You are going to love it and you are going to enjoy the ride. You are not going to have that fear of missing out and you will simply love what we are going to do. Thank you very much, guys, for joining in. I'm signing off. Have a wonderful time. Become a wonderful trader. See you tomorrow in the morning at 10 a.m. And you will, in case you have difficulty entering, you can simply contact on 99204 22202, and please put it on the YouTube also. If there are people there, they are also going to join in, then they should not have difficulty joining the program. Thank you very much. Have a wonderful time. Become a wonderful trader.